बाबर के खिलाफ खड़े हुए। और गुरु गोविंद सिंह जो यहाँ जन्म हुआ, 4 साल गुरु गोविंद सिंह आपकी बिहार की धरती पटना शहर में रहे। और गुरु गोविंद सिंह क्रिएटेड खालसा। क्या किया? ही क्रिएटेड ए न्यू नेशन, ए फियरलेस सोसाइटी, सो दैट द जुल्म और इन्वेडर का जुल्म हिंदुस्तान में खत्म हो। ये क्रेडिट बिहार को जाता है, पटना की मिट्टी को जाता है कि गुरु गोविंद सिंह जी ने सारे इंडिया को क्या क्या दिया। 1000 साल में गुलामी में इंडिया की यूनिटी खत्म हुई। गुरु गोविंद सिंह क्रिएटेड यूनिटी कि जो 5 पहले सिख बनाए इंडिया के 4 कॉर्नर से, कोई गुजरात से, कोई उड़ीसा से, कोई बिदर से, कोई यूपी से और एक लाहौर से। ही क्रिएटेड यूनिटी ऑफ इंडिया। सेकेंडली, ही फिनिश्ड अनटचेबिलिटी। जो पहले 5 सिख थे उनमें 3 दलित थे। इससे बड़ी मिसाल नहीं मिलती कि जो हमारे फर्स्ट 5 सिख हैं उसमें 3 दलित हैं। सो गुरु क्रिएटेड ए सोसाइटी, यूनिटी और फियरलेस और नो अनटचेबिलिटी। दैट सोसाइटी विच कुड फाइट, ये कहा कि चिड़ियों से बात करो। एंड ही नॉट ओनली एक्सपेरिमेंटेड बट प्रूव्ड इट कि हमारा एक सिंह 1 लाख से लड़ सकता है। अभी एक सारागढ़ी की बैटल की सेलिब्रेशन मनाई गई कि कैसे 21 सिखों ने 10,000 कबायलियों को रोक के सारा दिन रखा। तो देयर आर इंसिडेंट कि गुरु गोविंद सिंह क्रिएटेड दैट सोसाइटी। सर, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता कि बोलने वाले बहुत हैं, लेकिन एक बात मैं जरूर कह के जाऊंगा क्योंकि ये फंक्शन टूरिज्म डिपार्टमेंट का, मेरा भी टूरिज्म से संबंध है, मैं भारत सरकार का टूरिज्म एडवाइजर रहा, कि अभी टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए आपके पास गोल्ड माइन है, वो है पटना साहिब गुरु का स्थान। जितना आप जो भी आप करोगे, इट विल नॉट ओनली हेल्प बिहार, इट विल हेल्प इंडिया। गुरु गोविंद सिंह पिछले जन्म में हेमकुंड साहब लिखा है कि वहां थे, कई सदियां उन्होंने वहां तपस्या की। हेमकुंड इज द हाईएस्ट टेम्पल इन इंडिया, 15,000 फुट की ऊंचाई पे, 3 महीने खुलता है। 4 लाख सिख वहां यात्रा के लिए जाते हैं। एंड होल ऑफ द उत्तराखंड रीजन की इकॉनमी हैज बीन डेवलप्ड बाय हेमकुंड साहब। अभी साहब प्रकाश सिंह बादल की मेहरबानी से और पिछले डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर की हिम्मत से गुरु गोविंद सिंह का लास्ट रेस्टिंग प्लेस है नंदेड़ हजूर साहब, उसकी डेवलपमेंट हुई। और आज आपको पता है, आप रेलवे मंत्री रहे, बड़े कामयाब रेलवे मिनिस्टर। हर रोज 4 स्पेशल ट्रेन जाती हैं पंजाब से वहां यात्रा के लिए और लाखों लोग जाते हैं। दैट होल सिटी हैज बिकम ए टूरिस्ट अट्रैक्शन। तो मेरी आपसे यही बेनती है कि वाई पटना हैज नॉट बिकम पॉपुलर, बिकॉज रीचिंग जो हमारी जगह जाने की है, आज हम भी कहीं गए वापस आए 1.5 घंटा 2 घंटे लगते हैं। सर, इफ इन दिस सेलिब्रेशन यू डिसाइड, विद द हेल्प ऑफ बादल साहब आए आपकी मदद के लिए, सारे लोग आए, अकेला निष्काम सेवक दत्ता ने कितना कुछ कर दिया है इंग्लैंड से आके। अगर सम एलिवेटेड रोड टू मंदिर बन जाए, अगर हम रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट से इजीली कुड रीच और पटना टेम्पल पे, तो मैं आपको इतना ही चाहता हूं कि लाखों लोग यहाँ यात्रा के लिए आएंगे। दे वांट दिस फैसिलिटी। और इससे ना कि वो आप क्या धन्यवाद करेंगे, गुरु गोविंद सिंह महाराज से आशीर्वाद लेने आएंगे। एंड वी शुड डू अवर बेस्ट कि ये पटना साहिब के हर मंदिर की जो डेवलपमेंट है इसको प्रायोरिटी हो। और इस सेलिब्रेशन का ये बहुत बड़ा नीतीश जी आपका गिफ्ट होगा टुवर्ड्स ऑल दोज हु बिलीव इन गुरु गोविंद सिंह। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद श्री तलोचन सिंह, former Chairman National Monetaries Commission. And our next speaker is Dr. Ruby Dhalla, former MP Canadian House of Commons. She is a Canadian politician. She is the first Sikh woman to serve in the Canadian House of Commons. The first woman of India origin to get elected in Canada. She speaks on issues affecting constituents, minorities and women. ये पहली महिला हैं जो कनाडा में एक राजनीतिक
के रूप में कार्य कर रही हैं। और ये सौभाग्य है हमारे भारत के लिए, हमारे सिख समुदाय के लिए कि फर्स्ट सिख महिला हैं जो कनाडा में जो हाउस ऑफ कॉमन्स है वहाँ ये इलेक्टेड हुई हैं और हमारे देश का नाम वहाँ रोशन कर रही हैं। और हम सशक्त बिहार, सशक्त भारत और सशक्त महिला की बात कह सकते हैं इनके बारे में। तो बहुत जोरदार तारीफ के साथ डॉक्टर रूबी ढल्ला, फॉर्मर एमपी कैंडिडेट हाउस ऑफ कॉमन्स को मैं आप सबों के बीच आमंत्रित करती हूँ। Thank you for those very kind words. Honorable Chief Minister of Bihar, the Honorable Chief Minister of Punjab, the Deputy Chief Minister of Bihar, Honorable Ministers, Members of Parliament, Lords, distinguished guests of the dais, my fellow Sikhs from all over the world, the young girls and the young boys in the back of the room, and to all of the media, congratulations on the first ever International Sikh Conclave 2016 in Patna, Bihar. एक टाइम सी 1913 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਪ ਸੀ, it arrived on the west coast in Canada. ਉਸ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ 200 ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕ ਸੀ. There were 200 Indian people on board the Kamagata Maru ship. 200 Sikhs who had come to Canada. And when that ship arrived, ਜਦੋਂ ਉਹ ship ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ, the government of that time said to the 200 Sikhs on board that no one is allowed to enter Canada. 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, for 2 months, the 200 Sikhs were kept on that ship without food and without water. 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ 200 ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਉਹ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ. And when that ship was returned to India, those Sikhs were either killed or they were jailed. That, my fellow Sikhs and friends, that was 1913 in Canada. Then we fast forward to 2004. ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ by electing the first Sikh woman member of Parliament to the House of Commons in Canada. ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਖ ਲੇਡੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲੇਡੀ ਬਣੀ in the entire Western world. And ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, it wasn't my victory. It was the victory of each and every Sikh, of each and every Punjabi that throughout the world. ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ. 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਕੁੜੀ ਸੀ ਤੇ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 15 ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਨੇ. ਤੇ 15 ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ out of 50 members in parliament ਸਾਡੇ 4 ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਤੇ 4 ਮੰਤਰੀ 1 2 3 4 ਚਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ. And that, my friends,
is the victory of Sikhs. I remember when I was elected, the first motion that I passed in the House of Commons, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ motion pass ਕਰਾਈ ਸੀ House of Commons ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ apologize ਕਰੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ for the Kamagata Maru injustice and tragedy. Motion pass ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ time the Prime Minister ਨੇ, he did not give the apology in the House of Commons. And in 2010, I brought that Kamagata Maru motion again. And it was with great pride. मेरे ख्याल से तुसी सारे जने ने टेलीविजन के ऊपर वेख्या होना है, जो साडे प्राइम मिनिस्टर ने जस्टिन ट्रूडो ने थोड़े महीने पहला सारे कनेडा के पार्लियामेंट दे विच सारियां कोलों माफी मंगी for the injustice that occurred in 1913. We are here today to celebrate the values and the teachings of Guru Gobind Singh Ji. I know we have many speakers, so I don't want to take up too much time, but I do want to say in my closing remarks that while we celebrate the teachings of Guru Gobind Singh Ji, we must also, as Sikhs, we must never forget the injustices that take place with many of our Sikh brothers in the USA. We must never forget the discrimination that is taking place in France. We must never forget the attacks that are taking place against Sikhs throughout the world. They just released this book. And while I was looking at the book, ਜਦੋਂ ਮੈਂ book ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ, on page 85, it says, Guru Gobind Singh Ji ने ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ book ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ your work and not birth shall determine the place of each in society. That we must ensure that womenfolk are equal to men in every way. While our brothers face discrimination in many parts of the world, there are also many women who undergo injustice. And today, as someone who is very young, who has much to achieve yet, because there are many distinguished people on the dais and in the audience, I request humbly, मैं सारे जाने नो आज एक youth होके तनु ये बेनती करांगी that we must fight for the values of Guru Gobind Singh Ji. जो सानुआ ने सिक्ख्या दित्ती है, we must never forget to fight for equality, to fight for justice, to fight for human rights, to ensure that it is never about caste, it is never about creed, it is never about rich or the poor or black or white. It is justice and fairness for all. Because that is what Guru Gobind Singh Ji taught us. We must take his message to the masses. So to the Chief Minister of Bihar and your government, we say thank you that you have brought all Sikhs together. And to all of my Sikh brothers and sisters, I say to you today, our Gurujis have given us so many values, but we have a lot of work to do. So let's use this international Sikh conference and conclave as a call to action. ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਏਕਤਾ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਵੰਡ ਛਕੋ, ਕੀਰਤ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ।
वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। Thank you. On behalf of Government of Bihar, I would like to thank you, Dr. Ruby Dhala, Maaniniya Purva Sansad Kannada. Really, we feel very proud, a very pride moment for us to have you here with us. Thank you so much, ma'am. And now, मैं आप सबों के बीच संबोधन हेतु बुलाना चाहूँगी श्री रेशम सिंह संधू, माननीय डिप्यूटी लॉर्ड लेफ्टिनेंट लेसेस्टरशायर काउंटी, जो इंग्लैंड से आए हैं। मैं उनका आप सबों के बीच स्वागत करते हुए संबोधन हेतु उन्हें आमंत्रित करना चाहूँगी। The first Sikh High Sheriff of Leicestershire, the Chairman of Leicester Council of Faith, he was the first Sikh High Sheriff of UK. Welcome, sir. वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। It's a great privilege and pleasure to come here to attend this international Sikh Conclave. This evening, this afternoon, we all are gathered to celebrate 350th anniversary of a Guru whose example we cannot find anywhere in the history what he has done, achieved in a very short life, within 44 years of his life. That is the example we all to remember. Think about what we can give to this world and follow the footsteps of Guru Gobind Singh Ji. Guru Gobind Singh Ji, though he was born here in Bihar, he left this world in Maharashtra. He left his prime life in Punjab and a bit of in other parts of India. Though we classify Guru Gobind Singh Ji as a Guru of Sikhs, no doubt about it, but at the end of the day, he was a universal Guru. He should be accepted across all boundaries, all nations, all cultures and all faiths. That's what he has taught us, that's what we have to live together. Here, this afternoon, Prime Chief Minister of Bihar, I congratulate you, sir, what you are doing. And you have started this initiative. What the rest of India is going to follow. Sardar Prakash Singh Ji Badal, he is the leader. I met him long time ago, 45 years ago. Yesterday, this morning I mentioned to him, when I mentioned that I met you, sir, 45 years ago, he said to me, you still look young. And he has contributed a lot to the nation as well as to Punjab. And I congratulate you, sir, coming here as well to be a part of this international Sikh Conclave. I can give you one example, though I have been briefed that I speak very brief. In 2002, I managed to get Her Majesty the Queen to first time in UK, United Kingdom, in the Gurdwara. Spent 55 minutes. She took herself and went to the Darbar Hall and paid respect, put the bouquet flower in front of. Then we took her to the museum, and when we showed her the model of Harmandir Sahib, she did mention to us, she went there in 1997. Again, in her gold diamond jubilee in 2012, I was privileged to receive her, being myself the High Sheriff of Leicestershire, and then had lunch with her. You know, after 10 years, Her Majesty the Queen mentioned to me after lunch
that how is temple doing. After 10 years, she remembered her visit to the Gurukul. What I am saying here, why did I mention this story? The thing is that the Sikhs' contribution is known all over the world. This year, we started in 2014 the commemoration of the World War I anniversary.